Okay, so today we will start about the Kingdom Protista, and it is somewhat sort of easy. So we'll continue start with the Kingdom Protista and in today only. So starting with the Kingdom Protista. Kingdom Protista. First point or first ever characteristic of this is what every single unicellular organism are kept in this group. Okay, single unicellular plus eukaryotic. क्योंकि बैक्टीरियम ऑलरेडी क्या है, सिंगल है, यूनिसेलुलर है, बट दे आर ऑल व्हाट, दे आर प्रोकैरियोटिक, but this kingdom includes all single eukaryotic organisms. Okay, so first point will be what, all single eukaryotic organisms are kept here. Okay, this kingdom includes all the single eukaryotic organisms. Second point is what, कि किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं दैट आर नॉट वेल डिफाइंड. क्यों? क्योंकि इसी किंगडम से आगे क्या बना है, फंजाई किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमेलिया किंगडम. सो द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ओके, सो सेकंड पॉइंट विल बी व्हाट, नॉट हैविंग वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. द थर्ड पॉइंट, since it has not well defined boundary, why? Because from this kingdom only fungi, animalia and plantae have been arised. So what? It forms what? A connecting link. Connecting link between what? All the eukaryotic and prokaryotic organism. क्यों? क्योंकि prokaryote से पहले अब जाके eukaryote बन रहा है, फिर इसी eukaryote से क्या हो रहा है, all the three other eukaryotic organism will be formed. So it is forming what? Connecting link. Connecting link between prokaryotic and other eukaryotic organisms. Other eukaryotic means what? Fungi, plantae and animalia kingdoms. Okay. Fourth one is what? See, जब fungi, plantae और animalia इसी kingdom से बन रहे हैं, so it is what? It is ancestor of other eukaryotic kingdoms. Ancestor means, yes or no? Ancestor means other. I don't know. Okay. Ancestor means like दादा परदादा, या we can say कि our heritage organisms. ठीक है, जो दादा परदादा लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ancestor. सो एंसेस्टर, ये दादा परदादा किसके हुए, फंजाई किंगडम के, प्लांट किंगडम के और एनिमेलिया किंगडम के दादा परदादा कौन कहलाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा. सो एंसेस्ट्री मींस द हेरिटेज ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. ओके, सो एंसेस्टर ऑफ अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स. अदर किंगडम्स लाइक किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई. ओके, अदर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस किंगडम विल बी दैट दे हैव well defined nucleus. क्यों? क्योंकि ये लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, तो they are having what? Well defined nucleus. They have well defined nucleus. Now we will just write the characteristic of eukaryotes. They have membrane bound cell organelles. They have membrane bound cell organelles. See, these cell organelles were absent now. So absent where? These cell organelles were absent in the plant bacterial kingdoms. That means kingdom Monera. Now जब ये eukaryotic cell में convert हुए, तो eukaryotic cell contains what? Well defined nucleus होगा इसके पास. It will have all the membrane bound other cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, what we say, endoplasmic reticulum, vacuoles and every other cell organelles. Okay, so it will contain every organelles. Now next point, reproduction. We can say here asexual and sexual, both modes of reproduction are found. Asexual and sexual, both mode of reproduction are found. Okay? Both mode of reproduction are found. Asexual में भी कैसा होगा? Asexual will contain every. Okay, asexual will contain what? Binary fission. And sexual will contain what? Zygote formation. Yes, वही zygote formation. Okay, the same will be thing. तो asexual में कैसा होगा? Binary fission, क्योंकि most of the cell क्या करता है? Self fission या binary fission करता है. And sexual में क्या होगा? Zygote formation होगा. फिर जो दोनों जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं ना, उसमें भी क्या है, जो मियोसिस के थ्रू ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है. तो मियोसिस विल बी व्हाट? जाइगोटिक आल्सो एंड गैमेटिक आल्सो. मियोसिस इज बोथ गैमेटिक आल्सो प्लस जाइगोटिक आल्सो. ओके, जाइगोटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन भी कर रहा है. एंड गैमेटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जाइगोट के बाद जाइगोट के पहले जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो भी क्या हो रहा है? मियोसिस के थ्रू से ही हो रहा है. तो गैमेटिक मियोसिस भी होगा और जाइगोटिक मियोसिस भी होगा. नेक्स्ट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्रोटिस्टा. ओके, दे हैव वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर. ठीक, वाइड वेराइटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे हैव saprophytic also, saprophytic nutrition also. They have parasitic mode also. They have mixotropic also. Mixotropic. They are autotrophic. Some are heterotrophic also.
So here we can see heterotrophic. So wide variety of क्या देखने को मिल रहा है? Nutrition. Nutrition can be autotrophic, saprophytic, parasitic, mixotrophic, heterotrophic. Saprophytic is what? Dead and decaying organism पे feed करना. Parasitic was live as a parasite and take their nutrition. Mixotrophic is what? Combination of autotrophic plus heterotrophic. Okay, autotrophic is what? Made their food by themselves. Heterotrophic feed on other organisms, ready-made food. तो ये सारे mode of nutrition किसमें पाए जाते हैं? Kingdom Protista में. That is why they are said to have wide variety of nutrition. Okay, this much understood? Yes, ma'am. Okay, now we will come to the type. We will continue taking all the three types. Okay, one by one हम लोग पढ़ेंगे. Continue simultaneously we will take. C. Protista. Protista is having three types. And इसी nutrition के basis पे ही we are dividing the Protista. Okay, so don't get confused. On basis of nutrition. Basis of nutrition only. So first one is what? Autotrophic. Majorly we will study about autotrophic, consumer or decomposer, and last one is protozoan. So autotrophic or we can say photosynthetic. क्योंकि autotrophic already photosynthetic होते हैं. Photosynthetic. अब ये organisms हैं, इसलिए organism. But being organism, they are also what? Protist. So we can also say photosynthetic protist. Photosynthetic protist. Okay. So इसको हम लोग autotrophic भी बोल सकते हैं, photosynthetic organism भी बोल सकते हैं, and photosynthetic protist भी बोल सकते हैं. We can call any of these three. Okay. The second one is consumer decomposer protist, and the third one is what? Protozoans. Okay. Can you give me 1 minute? I think video recording is not. Okay, it was recording. Sorry. So example. Autotrophic or photosynthetic organism will include what? Diatoms, dinoflagellates, euglenoids, because they have capability of what? They are having capability of producing their own food. अपने से खुद खाना prepare करो in the presence of sunlight. That is why they are called autotrophic. So autotrophic के examples में क्या आ जाएगा? Yeah. Their examples will include diatoms, dinoflagellates. They will include euglenoids. Okay. So diatoms का भी एक अलग class पढ़ेंगे हम लोग. Dinoflagellates का भी अलग division है, euglenoids का भी. Okay. So we will be taking these three into separate categories further. And this one. Consumer protist includes what? Cellular slime molds and acellular slime molds. अब इसको slime molds क्यों कहते हैं? क्योंकि mold शब्द तो fungi में use होता है. Sana and Fica. Can any one of you tell me about why this is called mold? Yeah. Sana और Fica. कोई बता सकता है इसको slime mold क्यों कह रहे हैं? मतलब why they are called as molds? Acellular slime molds or slime molds. Do you know, Sana? No, ma'am. Okay, so molds are basically represented where? They are represented in fungi. Fungi में molds बनते हैं. So by this term only we can say what? That this can be or they can be the ancestor of fungi kingdom. अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे in the mode of nutrition वगैरह में भी ancestor of what? Fungi kingdom. So that is why sometimes they are also called as, these slime molds are also called as what? Protestant fungi. Okay, because mold का words ये kingdom fungi में use होता है because they are capable of forming mold like structure. So mold इसलिए use हो रहा है because they may be this kind of fungi is only the what? This kind of organism are the ancestor of fungi kingdom. Okay. Now here protozoans. Protozoans mainly includes what? Zooflagellates, sarcodines. Okay. Sporozoates also. Sporozoates, or we can say ciliates. See, zooflagellates are what? They are locomotion वाले, capable of locomotion. So locomotion किसमें होता है? Animals में. So we can say these protozoans are what? They may be ancestors of what? Animalia kingdom, ना? See, तीनों class में देखो, autotrophic कौन करता है? Plant kingdom. So these may be what? They may be ancestors of kingdom plantae, may be ancestors of plant kingdoms. Now these are what? Consumer हैं. ये क्या कहते हैं? Dead and decaying organism पे अपना feeding करते हैं. So they can be what? Ancestor of fungi kingdom. और यहाँ क्या हो रहा है? Locomotion organ है, locomotory ciliates है, flagellates हैं. So these are what? They can be ancestor of what? Animal kingdom. So इसी basis पे we can say कि ये क्या है? Connecting link है between all the three eukaryotic organisms. Okay, this much understood? Have you understood every point in this? Okay, now we will take the slide about this one. What this slide has to say. Okay, let me take some. So kingdom protista, it includes what? All single cell eukaryotes. I will explain. Boundaries of these kingdoms are not well defined. This line is of NCERT, so you have to remember. Okay.
एनसीईआरटी की ये लाइन है कि बाउंड्री नहीं डिफाइंड है. So you have to remember this line. This kingdom was first proposed by Ernst Haeckel. We have discussed this one in chapter number first कि kingdom protista कौन है propose किया था, तो Ernst Haeckel. Then physiologically kingdom protista act as connecting link between kingdom monera and complex multicellular kingdoms. I've explained this one. Then include the following category: dinoflagellate, chrysophytes, euglenoids, slime molds, and protozoan. See, protozoans is one other class. Dinoflagellates will come under this chrysophytes only, and this euglenoid also. Then slime molds is another class. We will continue to study in these three type of classes only. The greatest general feature is what? They are aquatic organisms that we will study. Most of them are aquatic only. Aquatic organisms, some live in the bodies of animals. They are parasites, ribosomes, as they are having every cell organelles. तो उनमें जो ribosomes है वो क्या है? 70s ना होके क्या है? 80s है. 80s ribosomes are present, mitochondria present, endoplasmic reticulum are present. Locomotion क्या है? May either occur by pseudopodia, cilia, wriggling, or flagellates and mucilage proportion. See, locomotion can be by cilia. अगर cilia present है तो cilia के थ्रू होगा. Wriggling motions किसमें होता है? Sporozoans में होता है when they are having flagella. तो flagella and cilia की वजह से various type of locomotion are possible in this kingdom. Okay. Then protists show various mode of nutrition. This point is important. See, they are photosynthetic. Holozoic. Holozoic means what? Zootrophic. They like amoeba and paramecium. They show this characteristic of what? Animalia kingdom. Then saprophytic. They like in slime molds. Feed on what? Dead and decaying organisms. Then mixotrophic. Mixotrophic is what? Autotrophic भी है और heterotrophic भी है. Symbiotic means and pinosistic. So pinosistic is what? ये अपने बाहर की चीजों को बस absorb कर लेते हैं. Cyst बनाते हैं ऐसे. अमीबा का ये cyst बनता है. अमीबा अपने बाहर की चीजों को absorb करके उसकी सेल को ले लेता है. So this is what pinosistic. Okay. And symbiotic. Sana. Symbiotic is what? I hope you understood about symbiotic relation. Explain me, Sana. What is symbiotic? Next is what? Most of the protists are aerobic. 1 minute. Okay. Can I explain? Yes. Give me a button. Yes. So I was talking about what? Symbiotic relationship. No? So symbiotic relationship is what? It's like mixed kind of relationship. एक हाथ से दो, एक हाथ से लो. ठीक? This kind of relationship is what? Symbiotic. Symbiotic means what? One organism is benefiting the other organism. Without benefit, they will not come together. ठीक? As I've explained कि azola और anabina जो थे, ana, veina and azola. तो ये लोग क्या करते थे? anabina क्या करता था? इसका जो था इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था. ठीक? एंड azola क्या करता था? इसको क्या करता था? शेल्टर देता था. तो जब तक ये anabina इसका काम नहीं करेगा, azola will not give it shelter. So that is why it is what? A kind of symbiotic relationship. Okay, symbiotic relationship is what? Both the terms or both the party are getting benefited. Without benefit, they will not come together. Understood? Symbiotic relation? Yes, ma'am. I think you should write it somewhere that it is what? Benefited kind of relationship. Okay? So now most of the protists are what? Aerobic. Aerobic is what? They will live in the presence of oxygen. However, some protists that live at the bottom of aquatic habitat, वो क्या है? Anaerobically भी respire कर सकते हैं. Bottom में कौन रहते हैं? Diatoms and yes, diatoms only रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो hard covering, later we will study, उनके पास जो cell wall की covering रहती है ना, that is made of silica. तो silica बहुत ज़्यादा hard होता है, which makes them capable of living at the bottom. ठीक है? तो वो bottom of sea के भी रहते हैं, and that is why they can live and they can produce and they can feed anaerobically also, that is in the absence of also oxygen also. Next is reproduction, asexually and sexually, both processes are found. Okay. Now we will study about photosynthetic protists, and I will take all the three, that is chrysophyte, diatoms, dinoflagellates, and euglenoids, all the three at we can see comparison table. Okay. Will it be fine if I take comparison table, or should I explain them separately? Yes or no? And every other students. So now photosynthetic protist. Photosynthetic protist. So these includes what? Chrysophytes. They include pyrophytes, and next one is euglenoids. या euglenophita भी कह सकते हो. Okay, euglenophyites or phyta. Okay, and features. Here I'll write features. So take. First feature is what? Habit and habitat. If we talk about their habit and habitat. So जो chrysophytes है ये लोग क्या है? Aquatic हैं. Mostly aquatic. Mostly इसमें क्या है? Mostly क्यों लग रहा है? क्योंकि some are terrestrial also. Mostly aquatic हैं. Some are terrestrial also. Okay. Now अगर इन दोनों की बात किया जाए, ये pyrophyta and euglenophita, तो ये क्या है? Mainly marine organism है. Marine means
Can anyone tell me what does mean marine? Means they will found only in sea and oceans, means bigger body water bodies में, ठीक है, only marine organism. Pyrophyta are only found in marine organism, or few are found in freshwater forms. Few are also found in where? Freshwater form. In fresh water bodies. Yeah, freshwater forms. Okay. Now euglenoid is also found in what? Freshwater bodies, or they can found in stagnant water. Now everyone tell me the meaning of stagnant. Found in fresh H2O, or what is the meaning of stagnant? Paika, Sana, anyone? Manjula, is it Purvank? Stagnant? Lazy. No. Stagnant water is what? Stagnant water is रुका हुआ पानी. We see somewhere in the, like we see झरना जहाँ रहता है, झरने जहाँ मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? Somewhere water bodies are what? They are like stopped there. They are just floating kind of water bodies, and they does not flow. Okay, so stopped, yeah, flow stopped, we can say flow stopped water bodies. Okay, those these are called stagnant water bodies. जहाँ रुका हुआ पानी रहता है, जहाँ से पानी फ्लोट नहीं करता है, आगे कहीं और नहीं आता है, those areas are water of those areas are called stagnant water. So mainly euglenophytes are found in fresh water, but some can also be found in stagnant water. Okay, so these are about their habitat. Now the next one we will study about the cell wall. Okay, cell wall. Here I have told the cell wall is made of silica, because it will include diatoms. Here their cell wall is stiff cellulosic plate. Their cell wall contains what? Stiff cellulosic plate. And here no cell wall is present. No cell wall present. यहाँ cell wall नहीं होता, but they have a protein layer. But a protein layer is present, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Pellicle. Cell wall किसमें नहीं present होता है? Okay. Cell wall किसमें नहीं present होता है? Animal cells में नहीं present होता है cell wall. So this is the basic characteristic of what? Animal cell. That is why euglena is said to be what? Connecting link between plants and animal. क्यों? क्योंकि उससे कुछ characteristics animal से match करते हैं, कुछ characteristics plant kingdom से match करते हैं. Understood? Now cell wall is over. The next characteristics will be structure. Okay. So structure is, their structure is what? These dinoflagellate, or we can say chrysophytes, their structure is soap-like. Soap, have you seen soap box? वो जो बॉक्स होता है जिसमें लोग साबुन रखते हैं, what we call it, yes, साबुनदानी. Have you seen that साबुनदानी? It is like this kind of like na. The smaller one is where they put the soap, and the bigger one is that the covering of the box. It is what? It's slightly bigger. So structure of dinoflagellates are like this one. Okay, the structure of dinoflagellates are like this one. One will be the smaller one, and upper part which is covering, it will be the little bit bigger. जो upper part cover करता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेकम. Epi means upper and theca means what? Covering. And जो lower part है उसको बोलते हैं hypothecum. Okay, so ये it is what? Soap box like arrangement है. Structure is soap box, arranged like soap box, we can say arranged like soap box. And here it is somewhat like a two groove like structure. Okay, so groove like structure is present. Groove like, the structure will be like this, where it will form groove. Two groove structure, one is transverse groove, another one will be longitudinal groove. Okay, and this transverse groove and longitudinal groove will have flagella in them. So two flagella are present. That is why they are also called as what? Dinoflagellates. Due to the presence of what? Two flagella. Dinoflagellates. इसके एग्जांपल पायरोफाइटा का क्या है? डायनोफ्लैजेलेट. एंड डायनोफ्लैजेलेट्स क्यों कह रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला. एक फ्लैजिला क्या है? ट्रांसवर्स है, और एक फ्लैजिला क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है. ओके, इट इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इट इज ट्रांसवर्स ग्रूव. ओके, एंड हियर इट्स स्ट्रक्चर. Its structure is what? Mainly locomotion kind of structure, or we can say slipper kind, like this. Okay, so slipper kind of structure है, and it will be having two flagella also, but one flagella is so small that it cannot come outside of the cell, and the other flagella is large one and have hairs on them. So जिसके दो flagella होते हैं, one flagella is called what? This is one flagella and this is the second flagella. So second one is called rough flagella and one is called smooth flagella. Smooth flagella क्यों? Because of absence of hair. And यहाँ पे क्या है? Hairs present. Okay. So they have three kind of like a structure. Now we will come to next point, which is flagella. So in diatoms, flagellas are mostly absent. If they will be found, only if they will be found, then they will be found in their reproductive or sexual stages. Otherwise, they will not be found. So flagella absent.
Here two flagella present. Two flagella present. One is what? One is transverse groove. Second, one is longitudinal one. Here also two flagella present. Two flagella present. One is large. One is small. Large one is hairs present. Small one is hairs absent. Till here, anyone have any confusion? They can ask about the structure, cell wall, habit and habitat, because there are many characteristics. See, habit and habitat is aquatic, then there are some are terrestrial, in this mostly marine, and some are freshwater, in this mostly freshwater and some can found in stagnant water. फिर सेल वॉल क्या है? क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल सिलिका का बना है. पायरोफाइट्स दैट इज डायनोफ्लेजिलेट्स देयर सेल वॉल इज स्किप सेलुलोसिक प्लेट. एंड यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता बट एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पेरिकल बोलते हैं. स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर सोप बॉक्स लाइक है. इसका पायरोफाइट्स का ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है एंड यूग्लिनोफाइट्स का स्लीपर काइंड स्ट्रक्चर है. ओके, फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट है क्राइसोफाइट्स में, एंड पायरोफाइट्स में टू फ्लैजिला प्रेजेंट है. यूग्लिनोफाइट्स में आल्सो टू फ्लैजिला प्रेजेंट है. नाउ कमिंग टू देयर पिगमेंट्स. सी, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑटोमेटिकली उनमें क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होना ही होना है. Everyone will include chlorophyll A. Okay, chlorophyll A will have every organism will have chlorophyll A. जितने भी photosynthetic organisms होंगे, चाहे वो photosynthetic protist हो, चाहे वो photosynthetic bacteria हो, चाहे वो photosynthetic plants क्यों ना हो, सब में chlorophyll A जरूर present होगा. So chlorophyll A के अलावा chrysophytes में chlorophyll C present है, beta carotene present है. Only you have to remember chlorophyll A, that is which is present in every one of them. Okay, and xanthophylls. Xanthophyll itself is what? Bag of different kind of pigments. इसको हम लोग बोलते हैं bag of different pigments. जिस ऑर्गेनिज्म में है उसके नीड के अकॉर्डिंग में पिगमेंट रहेगा. सो इसमें क्राइसोफाइट्स में xanthophyll कौन से टाइप का होगा? डाइजैंथिन्स. नाउ इसमें क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, बीटा एंड अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट है, एंड xanthophyll अगेन, बट इसमें xanthophyll दूसरा प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म. xanthophyll क्या है? पेरिडिनिन. ओके, and now here chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll B इसमें present आ गया. That is why it is what? Resembling to what? Plants. So इसका characteristic किसमें चला जाएगा? Plant kingdom में. Then it has beta carotene. It has xanthophyll also. See, due to this they are called what? Autotrophic. But 1 minute सना. नहीं, आज भी नहीं आई थी. ओके, सो यहाँ तो यूग्लिनोइड्स क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सनलाइट मिल रहा है. ऑटोट्रॉफिक व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट. तो जब भी सनलाइट होगा देन ओनली दे विल परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बट व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट, व्हेन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दे विल बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स की तरह क्यों करेंगे? बिकॉज जब भी सनलाइट नहीं रहेगा they will start feeding on other smaller organisms. अपने आसपास इसके पास जितने स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके ऊपर ये फीड करना शुरू कर देगा. दैट इज व्हाई इट हैज व्हाट? बोथ मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फॉर दिस रीजन ओनली इट इज व्हाट? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉपिक मींस व्हाट? ऑटोट्रॉफिक भी कर रहा है प्लस हेट्रोट्रॉफिक भी कर रहा है. इसीलिए ओनली मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन यूग्लिना. यूग्लिना के अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाए. ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट यूग्लिना दैट only मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड वेयर. सो ओनली यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस वन? पिगमेंट के बारे में समझ में आ गया सबको? नाउ वी विल टॉक अबाउट now we will talk about their reproduction. One more is there. No? Okay. We will talk about reproduction. So, hello. Yes. Yes. My name is joined. You joined late, or is it your first class? This is my first class, ma'am. Okay. So whatever I have taught you, did you understand? Yes, ma'am. Okay. If you have any doubt, you can ask in between. Okay. So I'm going to talk about reproduction in every three of them. Chrysophytes perform asexual reproduction. They have asexual reproduction. Okay, and in asexual most favorable or we can say favorite mode of reproduction क्या हो जाएगा? Binary fission. Binary fission in favorable conditions. जब भी conditions favorable होंगी वो लोग हमेशा क्या ऑप्ट करेंगे? Binary fission का प्रोसेस ऑप्ट करेंगे for their reproduction. And when condition is unfavorable, when unfavorable condition अगर रहेगा
तो वो लोग क्या करेंगे, दे यूज पेरिनेशन, दे यूज पेरिनेशन. ओके, we will discuss this later. Perination word, perination is just like we have studied, वो लोग एक सिस्ट बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, सेम इज देयर, दे गो फॉर पेरिनेशन प्रोसेस. अपने आप को कुछ देर के लिए क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मींस कवर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट अनफेवरेबल कंडीशन इज गॉन, दे एक्सपोज देमसेल्फ बाय deteriorating that covering. So this is also a kind of what cyst formation टाइप का है प्रोसेस, ये इसीलिए ये लोग पेरिनेशन यूज कर लेते हैं. And sexual method now. They also perform what? Sexual reproduction. So sexual reproduction, it includes 3 processes. One is isogamy, second is anisogamy, and third is what? Oogamy. So तीनों तरह का reproduction होता है, इसको मैं अच्छे से explain करूंगी later. Next, in which okay, pyrophyta ना. So pyrophyta में क्या होता है, rapid multiplication होता है, rapid multiplication of cells. Rapid asexual method में rapid multiplication of cells. सिर्फ वो लोग मल्टीप्लाई करके अपने बॉडी को मतलब बढ़ाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. एंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे हैव isogamy and anisogamy, not oogamy. Okay, and here they have asexual reproduction, longitudinal binary fission रहेगा, of course, asexual reproduction by longitudinal binary fission, longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission is what? Somewhat like this. एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से वो लोग डिवाइड करेंगे, this will form another new organism and this will form another new organism. And in unfavorable condition में they will again form a cyst. Cyst form करके क्या करेंगे, अपने बॉडी को कवर कर लेंगे, and when that unfavorable condition is gone, again they will be a new organism. वो सिर्फ cyst की लेयर को हटाने के बाद उनकी जो बॉडी बचती है, that body itself is called what? Reproduction. Okay, and here no sexual reproduction is found. No sexual reproduction in this one. Now coming back to this isogamy, anisogamy, oogamy. I'll explain. What is isogamy? Isogamy का मतलब है same size of gametes, same size in their structure also, size also, in their behavior also. Isogamy means अगर एक सेल ऐसा है तो दूसरा भी इतना ही साइज का होना चाहिए, इतने ही उसमें अंदर साइज होना चाहिए, उतनी ही मोटालिटी होनी चाहिए, उसमें जितना गैमेट है इसमें भी उतना ही गैमेट होने चाहिए. That is why they are called as what? Isogamy. Then only they will be called as same size or same gametes. So same, or we can say similar gamete formation and fusion, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी. जिसके गैमेट्स सिमिलर हो, साइज सिमिलर हो, मोटालिटी सिमिलर हो, उतने ही गैमेट रहनी चाहिए, तो दैट इज दे विल बी कॉल्ड एज आइसोगैमी. द सेकंड वन इज व्हाट? एनाइसोगैमी. नाउ एन लग गया तो उसमें क्या हो जाएगा, देयर स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, वन विल बी लार्ज, अनदर कैन बी स्मॉल फॉर zygote formation. Okay, so dissimilar in structure, dissimilar gametes formation and fusion. Now the third one is oogamy. Oogamy में क्या है, इसमें भी वही चीज है कि साइज डिफर कर सकता है, वो सिमिलैरिटी नहीं रहती, बट इसमें मेल स्मॉल रहेंगे एंड मोटाइल रहेंगे, एंड फीमेल वर्जन. This is male symbol and this one is female symbol. So female will be what? Large and non-motile. So in दोनों के fusion से जो zygote बनेगा, what they will be called as oogamy. Okay, they will be called as what? Oogamy. Like humans में भी क्या है, जो मेल का sperm रहता है that is motile and small, but जो female का रहता है ovum that is large and it is non-motile. So we human also kind of perform what? Oogamy kind of a fusion is there. So oogamy is what? Two different gamete formation and fusion. Now this point is clear ना, कि what is isogamy, anisogamy, oogamy. Isogamy में क्या है, दो सिमिलर गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा. एनाइसो में दोनों डिसिमिलर होंगे, कोई साइज बड़ा हो सकता है, कोई मोटाइल हो सकता है, कोई नॉन मोटाइल, कुछ भी हो सकता है. ओके, ओogamy में क्या है, साइज डिफरेंस तो होगा ही होगा, मोटालिटी भी डिफरेंस होगी. ओogamy में बेसिकली मोटालिटी का देखा जाता है कि एक मोटाइल होना चाहिए और दूसरा नॉन मोटाइल होना चाहिए, तभी ओogamy परफॉर्म होगा. ठीक, सो this one, like chrysophytes perform all the 3 type of sexual reproduction, and this pyrophyte perform only 2, and euglenophytes cannot perform sexual reproduction. Now the last characteristics, or we can say special features of all the 3 classes, so we will take as a separate one. Special features of what? First we will take of special feature of chrysophytes. Chrysophytes का पहला special features क्या है? They are chief producers of the ocean. Means कि oceans में जितने भी oxygen producers हैं, they are the chief one. So they are chief producer of oxygen in the ocean. They are
chief producers of oxygen in the oceans. Okay. Now, second point is what they maintain dissolved oxygen level in ocean and seas or wherever they are found. They maintain the DO level. DO means dissolved oxygen. ये जब हम लोग environmental chapter पढ़ेंगे ना तब we will discuss about what is dissolved oxygen. Dissolved oxygen. Okay. So they maintain dissolved oxygen level in water bodies. अब जहां भी ये डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा मींस वेरेवर क्रीसोफाइट्स आर फाउंड वहां क्या रहेगा पॉल्यूशन नहीं रहेगा सो दे आर आल्सो गुड इंडिकेटर व्हाट पॉल्यूटेड वाटर कि जहां भी ये लोग प्रेजेंट हैं वो क्या है अनपॉल्यूटेड वाटर है अगर क्राइसोफाइट्स नहीं प्रेजेंट है तो मींस दैट वाटर बॉडी इज पॉल्यूटेड सो दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर ये सब स्पेशल फीचर्स हैं दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स नेक्स्ट also they have cell wall which is made of what silica so they have silicaceous cell wall silicaceous cell wall यही silicaceous cell wall क्या होता है whenever these chrysophytes died तो वो जो died होते हैं ना they are very protective see it is very hard और ये डिसॉल्व नहीं हो पाता तो जब भी कोई क्रीसोफाइट्स डाई करते हैं या मर जाते हैं तो उनका जो ये सिलिकेशियस सेल वॉल लेयर है ना दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द बॉटम इट गेट्स व्हाट डिपॉजिटेड एट द बॉटम of sea or wherever water body is deposited at bottom of sea okay और जब भी ये बॉटम में क्या हो रहा है डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं डाई एटम्स फॉर्म करते हैं ठीक उस वाटर बॉडी को क्या करते हैं रिच बना देते हैं वेरी रिच इन सिलिका वेरी रिच इन सिलिका कंटेंट और यही सिलिका कंटेंट मींस दिस सिलिका आर यूज्ड फॉर व्हाट पॉलिशिंग क्योंकि ये हार्ड कैल्केरियस सरफेस हो जाती है जो सिलिकेशियस सेल वॉल है पॉलिशिंग के लिए भी ये यूज होता है ओके यूज इन पॉलिशिंग आल्सो so these are the special features which is found in what chrysophytes now the second special other special features is pyrophytes most important point is what they are called as fire of oceans ऐसा क्यों कहते हैं because they are capable of producing bioluminescence they perform bioluminescence means what लाइट एमिट करना ओके एंड बायो मींस व्हाट ये ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है whosoever organism emit light उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस सो पायरोफाइट्स के अंदर भी क्या है स्पेशल एबिलिटी है टू परफॉर्म बायोल्यूमिनेसेंस वो ओशियंस एंड सीज जहां भी पाए जाते हैं वो चमकते हैं हैव यू सीन दैट मूवी या एक विलन में जैसे वो जाती है श्रद्धा कपूर उसका जो एक ख्वाहिश रहता है लिस्ट ऑफ डायरीज तो उसमें उसको वो सी पे ले जाता है लाइक ब्लू काइंड ऑफ सीज और एवरीवेयर जिसको we will see that it look like crystal but उसको जब वो उठाएंगे हाथ में तो वो क्या रहेगा वो pyrophytes कहते हैं actually have you seen those structures anyone blue bed seas जो चमकते रहते हैं रात में have you seen anyone okay so seems none of you have seen the movie of एक villain have you seen or not Kana No, ma'am. you don't have seen so next time will I that means tomorrow I'll show you that image like this sea is there and all over the sea blue kind of water is flowing it will look like crystals is showing but these are not crystals these are what pyrophytes they show bioluminescence at night and they emit light and that is why they look very beautiful and very attractive so it is one of the feature of what pyrophytes next is what they causes red tide also red tide see Sana I've taught you about red sea is caused by one of the cyanobacteria it is red tide is caused by what pyrophytes and red tide is toxic NCERT has mentioned this one that red sea is toxic क्योंकि ये लोग एक टॉक्सिक सीक्रेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्सीटॉक्सिन सीक्रेट्स सैक्सीटॉक्सिन एंड सैक्सीटॉक्सिन सीक्रेट करने की वजह से जिस भी वाटर बॉडीज में ये रेड टाइड होता है दैट कैन नॉट बी हेल्दी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां भी ये रहेगा इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट न्यूरोटॉक्सिन सो ये क्या करता है अफेक्ट करता है वाटर बॉडीज को इफेक्ट वाटर बॉडीज एंड उस जगह के प्लांट एंड और उस जगह के फिशेस को मींस एक्वाटिक एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगा ओके सो दिस वन इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ pyrophytes. Now the last one is we can say euglenophytes. The third one is euglenophytes. So it is first and most important connecting link between what plant and animals. ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना connecting link between plants and animals. थ्रू आउट मैंने बताया कि किस किस रीजन से कनेक्टिंग लिंक है तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है लाइक प्लांट्स में अगर बोला जाए तो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है एनिमल्स में बोला जाए तो सीलिया और फ्लैजेला यहाँ प्रेजेंट है
ओके, लोकोमोशन के लिए। सो बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। एंड यहाँ पे क्लोरोफिल बी के अलावा क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सो इसका इसीलिए मेन कैरेक्टर या मेन स्पेशल फीचर इज व्हाट, दैट इट परफॉर्म connecting link between plant and animal and is connection to the mesotrophic nutrition. Second important क्या है कि इसका mesotrophic nutrition है। The only organism, सिर्फ एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो mesotrophic nutrition परफॉर्म करता है। इसके अलावा और कोई भी ऑर्गेनिज्म mesotrophic nutrition नहीं परफॉर्म करेगा। So this all the three classes of photosynthetic, yes, photosynthetic organism have completed. Now we can come to the slide. Photosynthetic protist, yes. These are chrysophytes, as explained. Main part is phytoplanktons are diatoms. Chrysophytes include dinoflagellates and euglenoids. See, I have explained what diatoms also, dinoflagellates also, and euglenoids also. Now, chrysophytes में diatoms here. See, they are structured. These are what? Diatoms. It is very enlarged structure. सिर्फ ये एक कहलाता है diatoms, and these diatoms have capable of performing every other activity. Okay. So these diatoms are what? Aquatic and moist terrestrial habitats, also known as chief producer in the ocean. I have explained. They pile up at the bottom of water reservoir, big heaps, जिसको हम लोग बोलते हैं diatomaceous earth. जब वो सिलिका शेल इनके मरने के बाद नीचे ओशन के बॉटम में जमा हो जाता है, तो उस अर्थ को बोलते हैं diatomaceous earth. Okay? They are microscopic as always. Unicellular है तो microscopic भी होंगे. Unicellular organism है having different shapes, circle, semicircle, triangle. See, they have various shapes. So this is not very important point to remember. You can remember this point B1 and A1, that chief producers in the ocean. The cells of diatoms are called what? Frustules. See, इनके cells को हम लोग frustules बोलते हैं, just for giving a name. कोई भी nickname दे सकते हैं, but they have this nickname what? Frustules, and it is not as important as every other topic. Body walls of diatom is what? Made up of cellulose impregnated with what? Glass-like silicon. That is why क्या बना देता है, इसको बहुत टफ बना देता है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है सिंपली ये सेल। लेकिन जब भी ये डिस्ट्रक्ट होता है, यानी कि जब भी ये सेल डाई करता है, तो वो सिलिका नीचे बॉटम ऑफ ओशन पे जमा हो जाता है। एंड अपर हाफ इज व्हाट? एपिथिका एंड लोअर हाफ इज व्हाट? हाइपोथिका। ठीक, एपिथिका एंड हाइपोथिका इज समवhat लाइक दिस स्ट्रक्चर ना। सी, इट इज एपिथिका एंड इट इज व्हाट? हाइपोथिका। Diatoms are variously colored, do not possess flagella except in the reproductive stage. I have explained this one also. Each have large central vacuole. Chloroplasts are yellowish brown to greenish brown. See, they are performing autotrophic nutrition, so they must have chloroplast in them. And chlorophyll A, chlorophyll C, chlorophyll B. Okay, chlorophyll A and C are found. Chlorophyll B is absent. Chlorophyll B कहाँ present है? euglenoids में. They contain fucoxanthin, जो brownish tint देता है. Food reservoir is in form of what? Oil and leucocene. Diatoms mostly reproduce by what? Binary fission की वजह से. Sexual reproduction vary करता है. Oogamy भी है, isogamy भी है, and anisogamy भी है. Examples में you can learn navicula and amphipleura. These two are not as important as these one. Okay, so hope this one is clear to everyone. Everyone understood or not about these two? Sana, Purvang, Faika, have you understood about these two? Okay, no reply is there, so I'm assuming everyone has understood. So dinoflagellates, they are mainly marine and photosynthetic organism. This is the structure. See, they have two flagella. I've drawn the diagram like this. Now, one is this flagella and another is transverse kind of flagella. And due to this one, their movement is like this. Spiral movement है in organisms के अंदर. Okay. General characteristic is what? Important है phytoplankton, mostly marine है, some occur in fresh water also. They appear yellow, green, brown depending on main pigment. वो जो जितना भी pigment इनके अंदर present है उसके ऊपर depend करता है. Cell wall in dinoflagellate, if present, composed of numerous white plates, cellulosic structure. I have explained. You have to remember this name, gonolix and gymnodium. They grow in large in sea. यही दोनों की वजह से क्या होता है? रेड टाइड होता है. ओके, रेड टाइड कॉज करते हैं एंड टॉक्सिन रिलीज करते हैं. रिलीज सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर एक्वेटिक एनिमल्स. तो जहां भी ये रेड टाइड क्रिएट करते हैं, वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल रहता है. फिर सम डायनोफिश लाइक नॉक्टिलुका, ये लाइट बायोल्यूमिनेशन परफॉर्म करता है. ओके, पायरोसिस्टिस एक्सेट्रा आर फोटोफॉस्फोरेन एंड शो बायोल्यूमिनेसेंस. सी, Noctiluca is most important, मतलब कि Noctiluca generally सब ज्यादा रिमेम्बर करते हैं. These cells usually possess two flagella. I have explained them. Okay, and other flagella arise in vertical furrow, and one is arise from what? Horizontal furrow, transverse arising. The nucleus is bigger in size, named as mesokaryon. Nucleus इनका बड़ा होता है, जिसको हम लोग mesokaryon बोल देते हैं. फिर the cell possesses an osmoregulatory organelle, pustule बोलते हैं जिसको. This is not. This is just for what? Osmoregulation, that is maintaining body temperature. Reserve food is in the form of starch and oils. Examples में you have to remember these two names because they cause red tides, and here Noctiluca and Pyrocystis because of their bioluminescence. Okay, now euglenoids.
They live in freshwater habitats and damp soils, mostly in stagnant water also. And characteristic features क्या क्या हैं? Unicellular flagellates हैं, body is covered with thin protein layers जिसको हम लोग pellicle बोलते हैं. इसी की वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है, सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं होता है. यूग्लिनोइड्स have two flagella, one long and another one short. सी टू फ्लेजिला है, एक तो ये लॉन्ग वाला है, अनदर वन इज शॉर्ट, जो कि वो अंदर ही रह जाता है, वो निकल नहीं पाता है बॉडी के बाहर. दे परफॉर्म क्रीपिंग मूवमेंट, मींस कि वो क्रीप करते हैं बाय एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ देयर बॉडी. ये क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक फेनोमेना. फिर ईच सेल पॉजेस माउथ एंड एंटीरियर इन. ये माउथ एंड एंटीरियर इन क्यों परफॉर्म करते हैं? जब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे तो इनका तब यूज होगा माउथ एंड एंटीरियर इन का. यूग्लिनोइड्स आर ऑटोट्रॉफिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जब सनलाइट नहीं रहता तो दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स. Now the next one, photosynthetic pigment, chlorophyll A and B. B characteristic है plants का. Food reservoir is carbohydrate in form of paramylon and paramylum. This is not so important. Euglenoids they produce by longitudinal binary fission and at the flagellar end. Means कि यहाँ से शुरू होगा, flagellar end से उसका groove formation शुरू होगा and then they will continue to the anterior end and divide. Okay. Then up to here we have studied, and I suppose from this topic we will study tomorrow. Or if you can give me 10 minutes, I can finish this to consumer decomposer also and the last one also. If you both have time. Depend on you three. These are not so tougher ones. Sana, Purvang, Faika. If you have time, then only I will explain about these two. Otherwise, I'll close the class here only. Yeah, maths class next. Okay, then I'll continue teaching in the next class. Okay? Right. Okay. Yes, ma'am. Okay. See you tomorrow, everyone. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, Sana. Bye, ma'am. Sana, will you be there for assignment class or you will submit it tomorrow morning? हम अभी कर लें? If you wish to do right now, if you have some work, you can submit it till tomorrow morning. It's up to you because you have messaged that you can submit tomorrow. हम अभी कर रहे हैं. Okay, then I'll be here.